जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने पहला पार्ट देख चुका होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का था। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि अभी हम लोग एवोपोरेशंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आखिर एवोपोरेशंस वगैरह होता क्या है, ठीक है। इवोपरेशंस क्या है? अगर हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, और वो अगर आप देखिएगा ना गैस वगैरह पे पानी को गर्म करते हैं तो वो नीचे देखिएगा कि जब पानी गर्म होता है तो वो गैस के माध्यम से जो निकलता है वही क्या है, एक इवोपरेशंस है, ठीक है। तो ये आसान भाषा में आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक्टिव ऐड 2 स्पून्स ऑफ साल्ट टू वाटर एंड अनदर बीकर टू स्टेट वेल डू यू, ये देखिए, है ना। ये साल्ट और वाटर को गर्म किया जाता है। See any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker? After stirring, heat the beaker and containing the salt water 5.1। ये देखिए, मतलब पानी और साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। Let the water boil away what is left in the beaker. This activity used to process evaporation separated from mixtures water and salt. The process of conversions of water into vapor is called evaporation। मतलब क्या बोला कि ऐसा प्रोसेस जो वाटर से क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, एवोपरेशन। एवोपरेशन बोलेंगे जैसे पानी को गर्म करते हैं तो एवोपरेट बन के ऊपर उठता है, उसी को क्या है, एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो वाटर से वेपर में चेंज होता है, उसी को क्या बोलेंगे, एवोपरेशन बोलेंगे। द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली whenever water is present। Where do you think salt comes from? Sea water contain many salt mixed in। मतलब जो सी होता है, सी का वाटर होता है, उसमें क्या रहता है, साल्ट मिक्स रहता है। साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, NaCl, ठीक है, इसको याद रखेंगे। वाटर का क्या होता है, वाटर का H2O होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। containing mixed salt mix, one of these salt is common salt। When seawater is allowed to stand the shallow pits, water gets heated by the sunlight and slowly turns into the water vapor through evaporation. In few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salt 5.12। ये देखिए, ये क्या है कि जो सी जो रहता है, सी में क्या रहता है, साल्ट मिला रहता है, मतलब वो सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। सी में जो होता है वो सॉल्टी वाटर, वो पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। अगर हम सी को वाटर को एक साथ कलेक्ट करते हैं और कुछ दिन बाद देखेंगे ना तो एवोपरेट होकर क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट क्या रहता है, साल्ट रहता है, ठीक है। तो वही बता रहा है। Common salt then obtained from a mixture salt by the further purification। Notice steam come out from the spout and kettle, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्यूरिफिकेशंस। अब यहाँ पे देखेंगे कि यूज मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशंस, मतलब एक से ज़्यादा मेथड क्या हो सकता है सेपरेशंस का, ठीक है। We have studied some method for separation of substance from mixtures. Often one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture. In such situations, we need to use more than one of these method। अब क्या है, अब एक से अलग अलग मेथड करने का क्या है, क्या क्या तरीका है, वो सब बताएगा, ठीक है। अब क्या बोला कि टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट, सैंड बालू और साल्ट का मिक्सचर लेना। हाउ विल द सेपरेट दिस? वी ऑलरेडी सॉ that hand picking would not be a practical method of separating this। Keep these mixtures in a beaker and add some water to leave the beakers and aside। Sometimes do you see sand sliding down and bottom? The sand can separate by the decantation or filtration। What does the decantation of liquid concern? Do you think this water contains salt, which was where the mixtures at the beginning?
need to separate salt and water. salt है तो फिर salt का फॉर्मूला याद रहना चाहिए. salt का क्या होता है, NaCl होता है, तो water का H2O होता है. From the decantation liquid, transfer the liquid of kettle and close it lid. Heat the kettle for some time. Do you steam coming out from the sports kettle? Take a metal plate with some ice and it, hold it plate and just above the spout and kettle soon will be well. Take a metal with some ice and hold it plate above the spout kettle shown in figure. What do you observe? Let us water in the kettle boil off. ठीक है, जब भी बॉयल वगैरह करेंगे तो उसमें एक बन जाता है, और भाप बन के क्या बन जाता है, उसको लिक्विड बन जाता है. उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वाटर वेपर क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है. उसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलेंगे. ठीक है. When the steam comes from in contact the metal plate and cool with ice, it condenses from the liquid water. The water droplet will absorb the falling plates and where do the condensation steam. This process of conversions of a vapor वाटर वेपर इंटू अ लिक्विड फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, मतलब एक ऐसा ऐसा वाटर वेपर क्या है, लिक्विड में बदलता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलेंगे. ठीक है, कंडेंसेशन क्या बोलेंगे, वाटर वेपर को लिक्विड में जो चेंज होता है उसी को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे. वेपराइजेशन किसको बोलेंगे, वाटर से क्या बनता है, वाटर को अगर गर्म करते हैं तो वेपर में बदलता है. ठीक है, तो उसको एवापोरेशन बोलेंगे. डू यू एवर सीन द वाटर ड्रॉपलेट्स कंसेप्ट अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? After all the water has evaporated, what is left behind the kettle? We have thus separate salt and water using the process of decantation, filtration, evaporation, and condensation. पहली face a problem while recovering a salt. Mix a sand has mixture of pocket of salt in a small, and she tried to method and suggest activities even recall the salt. She found, however, that she could recover only a small part of salt and had. Can water dissolve amount of substance? Can water dissolve any amount of substance? क्या वाटर डिजॉल्व हो सकता है कोई भी सब्सटेंस में? देख लेते हैं. ठीक है, अब क्या होगा कि इन चैप्टर 4 में वी हैव फाउंड मेनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशंस. वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सोल्यूबल. सोल्यूबल करने का मतलब जो वाटर में आसानी से घुल जाए उसी को क्या बोलेंगे, सोल्यूबल बोलेंगे. और जो आसानी से नहीं घुलता है उसको घुलता है उसको क्या बोलेंगे, इनसोल्यूबल बोलेंगे. ठीक है, you will need a beaker or a small pan of spoon and salt water. Pour half a cup of water in the beaker and add 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolves completely. Again, add 2 teaspoons of salt and stir. Go on adding salt and teaspoon at a time and stir. After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settle at the bottom of beaker? If yes, this means that no more salt can dissolve the amount of water we have been taking. The solution is not saturated solution. Here hint what might have gone wrong and Paheli tried recover the large quantity of salt mixed with the sand, perhaps the quantity of salt much more than the required more saturated solution. Is would the remain the mixtures of sand and could not recover this. All is problem is called large quantity. Suppose she did not have a sufficient quantity of water to dissolve all the salt in a mixture. This sum of the wave may dissolve more and solution gets saturated. ठीक है,
last method is called activity 9. Take some water in a beaker with a mixture of salt until cannot dissolve any more salt. This will give you saturated solutions in salt and water. And now add some quantity of salt. This is saturated solution and heat it. What do you find? What happens to undissolved salt in the bottom of beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in these solutions? Let the hot solution cool. The salt appears to settle at the bottom of the beaker. The activity suggests that the larger quantity of salt can be dissolved in the water by heating. Does water dissolve equal amount of different soluble substance? ठीक है क्या बोला कि एक्टिविटी 10 ठीक है 2 glass and pour half of water each of them. Add a teaspoon of salt to one glass and stir till the salt dissolve. Go on adding salt and teaspoon at a time till the solution is saturated. Record the number of teaspoons salt and dissolve in the water. Now repeat the same activity with sugar. Repeat with some other substances soluble in water. Soluble करने का मतलब कि ऐसा particle जो वाटर में soluble. Some of the method separation present in this chapter. We learn the solutions and dissolving substance in liquid or solution is said to be saturated if it cannot dissolve more amount substance. ठीक है अब इसमें क्या है कुछ समरी दिया हुआ है कि हैंड पिकिंग विनिंग एंड सेडिमेंटेशन कंटेशन फिल्ट्रेशन सम मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस मतलब सेपरेटिंग मेथड सब्सटेंस के हैंड पिकिंग है विनोइंग है सीविंग है सेडिमेंटेशन डिकंटेशन ये क्या सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का एक मेथड है ठीक है rocks and stones will be separate from grains and hand picking rocks separate from heavier seeds and grain by winning different the size of the particles in mixture utilized to separate them the process of sieving and filtration. The mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down in the bottom and water can separate by decantations. Filtration can use to separate components of mixture in insoluble solid and liquid. Evaporation is the process by which लिक्विड gets converted into vapor. evaporation क्या है कि लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें वेपर में तो उसी को क्या बोलेंगे evaporation. Evaporation can be used separation of solid dissolved in a liquid. Saturation solution is one which no more substance can be dissolved. More of substance can be dissolved in solution by heating it. Water dissolve different amount substance. ये है क्वेश्चन आंसर आप लोग कीजिएगा.